welcome to Rajni 007 Maths tutorial. Today I am going to discuss on square of a number in which every digit is 1. How you can find the square of any number in which every digit is 1 within a second. Just see what is the method for that. See. Count the number of digit in the given number. हमें क्या करना है, पहले नंबर को काउंट करना है एंड स्टार्ट राइटिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 1. लेट्स क्लियर इट विथ एग्जांपल. 1 स्क्वायर. तो व्हाट इज द रूल फॉर काउंट द नंबर ऑफ डिजिट? हाउ मेनी डिजिट आर देयर? 1 2 3. 3 डिजिट आर देयर. तो स्टार्ट राइटिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग. 1 2 3 till 3 we have written because 3 digits are there. यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट है इसलिए हम 3 डिजिट तक ही लिखेंगे. 1 2 3 एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर. 3 के बाद क्या आता है? 2 1. तो दिस इज द सिंपल मेथड. फर्स्ट यू हैव टू राइट नंबर ऑफ डिजिट. हाउ मेनी 3 आर देयर दैट यू हैव टू स्टॉप टिल 3 तक ही लिखना है. उसके बाद आपको स्टॉप हो जाना है. जितने डिजिट है उतना ही आपको लिखना है. 1 2 3 देन descending order start after 3 2 1. Let's see one more example. 1 1 1. How many digits are there? 4. So we will write 1 2 3 4. Then as descending order will start 4. After 4 3 2 1. In this way, if we write 2 2 2 square will be there, then what will be the process? 2 2 square means what? 2 square 1 1 1 square, right? 2 2 2 square means we have taken 2 back. So 2 square into 1 1 1 square. 2 square will be 4 and 1 1 1 square we know 1 2 3 because 3 digits are there. Then 3 2 1. Welcome. 8 4 2 9 4. Let's take one more example. In this way, if any bigger number is coming for one digit, the same digit if repeated, एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, अगर उसका स्क्वायर करना है तो ये प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई दिस प्रोसेस ऑल्सो. What for 3? Same process. 3 square into 1 1 1 1 square. 3 square will be 9. And here 4 digit are there, means we will write 1 2 3 4. Then descending order 4 3 2 1. If we multiply it, it will come 8 9 8 8 0 1 1 1. So in this way you can find the square of a number in which every digit is 1. For this is the method only for the number in which every digit is 1, and by this process you can see you can find the square of a number within a seconds. So apply, if you are getting this type of a square, please apply this type of rules and you can find it easily. Thanks for watching my video. If you like it, please like my video and subscribe my channel to get more maths video. Thank you.